Good afternoon, everyone. Hello, Avinash sir. Hi. So, shall we Yes, start? madam. Yes. Okay. Yeah, we can start. We can start. Sir, wait for another 2 minutes, 2 or 3 minutes, so that all the students can join, and then we will start. Okay. No problem, madam. No problem. Okay, sir. Hello, Avinash sir. How are you? Hello. Sorry. I was away. Yeah. Sir, Hello. can you keep your video on, like for so that everyone knows that you are Everyone knows that who is who you taking are the actually. lecture. Yeah. Okay, Okay. so I think most of the faculty members from printing technology of PVG. So maybe you know them personally, I think. Personally, I don't know, but ज़्यादा मिला नहीं ना, madam. Okay, no. हाँ, but ठीक है. By name and all, we know each other. Yeah. Okay. So we have with us Lakshmi Sapkal ma'am. Hello, madam. She's a faculty. Hello, sir. How are you? department. Yeah, when you said I was away, madam, that's why I could not respond you. I went to have water. Okay. No issue, sir. Yeah. And we So have we have Lakshmi madam, I know, I recall. We had. spoken recently. Yes, madam, yes. Yeah, but please focus on that sustainability. Sustainability. Yeah, Maybe sir. And second lecture packaging. we can do on sustainability properly. Okay. Sir, Okay. actually No today's issue. means hot topic is only sustainability. Today in today's Ah, packaging world. that That's we why will talk. everyone wants to know Yes, about you can sustainability add of a few packaging. points. ठीक है, You can add a few points on sustainability. ठीक है. Okay, madam, okay. And we have with us Sumedh Kapre sir. I think you must be knowing him very well. Hello, sir. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you? I'm very fine. How are you? I'm good, sir. Yeah. So whole team is there. Yes, most ठीक है. Okay, great. everyone wants to listen about the packaging only. So as I अच्छा. about sustainable packaging it's a hot topic nowadays for packaging. Madam, you did not tell me sustainable packaging, but Actually, I will sir, try to. this is exclusively for second year students because they are having the subject of packaging technology. Like But I will talk about sustainable packaging also. Yeah, sure, no Anytime, problem. Lakshmi madam, Sumit sir, if you want me to talk something else, then you can always tell ki is pe bhi thoda. Nahi to next time again, next topic we can have it with the proper PPT and all this. Okay, sir, no problem. Yeah, madam, tell me. Okay, so I think shall we start? Okay, so I would so welcome all of you. Like we have second year, third year, and final year students with us. So I would like to introduce Avinash sir before like proceeding for the lecture, so that everyone will be knowing that actually Avinash sir achievements and all. Okay, so welcome all again. Thank you all for coming for this expert lecture, which will be given by Mr. Avinash Singh. So before we proceed for this lecture, introduce Mr. Avinash Singh with a quick introduction of him. Actually, the person with us is a multi-talented person, and I cannot define in limited words. Currently working in Parks and Packaging as an assistant manager for developments of packaging, for marketing and the sales. Just give me a second, sir. I'll show your presentation there as well.
Just give me a second. Yeah. So we have Mr. Avinash Singh, and okay, so I will be talking about his educational background. So currently he's working with the Parks and Packaging as an assistant manager for new developments of packaging in for marketing and sales department. And he's MTech in printing and media technology from Manipal Institute of Technology, in 2013 and 15 batch. And he's BTech from, as I said, he's multi-talented. So his BTech is in computer science from Karavali Institute of Technology, Mangalore. And after doing the computer science, he comes into the printing department. So, when the best part of it that he's having experience also. So today you people will be having a lot of learning skills from a professor as well, as he worked in SIS assistant professor in Department of Printing Technology, and from 2015 to 17, and also he worked in Amazon packaging based in packaging development experience from 2017 to 19. Experience from working in Ferrero India Limited, based in Pune as a senior packaging technician from 2019 to 2020, and many more small projects he did in packaging industries to gain his knowledge. So today he will be discussing about the manufacturing of a carton packaging, because the second year students are in their syllabus, and also focusing on the perspective and the packaging course with respect to the product as well. And also he'll be sharing his industry experience, like what you have to get a job in packaging industries and some do's and don'ts. Sir, now I want to take over this, and I shall kindly share your valuable points in industry actually with students, so that they can understand the subject more practically. Yeah. Okay, now Sure. over to you, sir. Yeah. Thanks. So, madam, should I put my video off No, or I keep it on? Sir, up to you only. Whatever No, you want to do, you can. So I prefer it off only because Yeah. I get sensitive. Okay, no problem, sir. Yeah. So hello students, and in this session, madam, my voice is not breaking, na? Because when you were talking, na, Swati, your voice was breaking in between. So this is not happening in my case, right? Okay, no, I think your voice is perfectly going, so no problem. Yeah. Okay. So see, students, my intention is to interact with you and you gain more and more from this 1 hour of the session. So what happens is, it's not that one way of communication. You can also speak in Hindi, English, Marathi. There is no problem. Whichever way you find it convenient to ask anything, or you can ask. Okay. So that's one thing. So before I take you to any presentation, or I'm not going to tell you any lecture or anything, because that madam and sir is expert and they are doing it already. I'll tell you some industrial problems and all these things, and totally from the FMCG and the packaging point of view. Okay, because you people are expert of printing already, and we all are in fact expert of printing, but thoda sa hamara kya hai, packaging segment also needs to be boosted up. So just I'll do one session of see what happens is na ki there are in India, we have a top 10, 15 FMCG industries. Can you name them? Top 15 students. I'm talking to students. Top 15. मैं एक दो बता देता हूँ. Like HUL is there. Okay, Johnson and Johnson is there. Ferrero is there. So can everybody start talking, and एक दो नाम हम बता सकते हैं क्या? See, let's make it interactive. हाँ. No need to chat. You can talk. They are muted, kya madam? No, sir, they can talk. They can talk na. Abhishek, you can also. हाँ. Hello. So Abhishek, you said Unilever. Hello. You can Sir, yes, sir. हाँ, HUL, Unilever, Nestle. Nestle is there, right?
Tetra Pak. Britannia. Tetra Pak is a type of converter. Huh? I'm talking about FMCG now. Tetra Pak supplies to the other people like PepsiCo and Paperboat Hector, all these people like Coca-Cola. We will talk about this also. Then what are the name? Britannia. Britannia is there. Britannia, what all brands Britannia is making? I'll tell you the reason why I'm asking this, because this will give you a whole lot of perspective. When you go to the mall, when you look at the product from tomorrow onwards, you will see it from the company point of view and not from the brand point of view. And then we will go to the, this is a zero level I'm talking about, but then after 10 minutes, we'll go to -1 and -2, wherein the material we will discuss, what all material they are using in packaging. So we'll discuss that. Yeah, Britannia, what all products, what all brands you come up with, the famous brands of Britannia? I'll tell you one, Marigold is their biscuit. Parle-G. Parle-G is not from Britannia, na? Parle-G to Parle, Copoli. Acha, you said Marigold. FMCG. Okay, I'm sorry. Yeah, Santanu? So maybe Marigold. Marigold is one of the brand from Britannia. What और एक और कोई brand आपको याद आता है क्या Britannia का? बिस्किट सेगमेंट में और क्या क्या बिस्किट है हमारे पास मार्केट में? डार्क फैंटेसी इज देयर? Yes, that one. वो किसका है? हाँ? कौन से कंपनी का है बॉर्बन? Britannia only. Britannia only. And dark fantasy? Anyone can speak, huh? We have 80 people. Sunfeast. Sunfeast किसका है? Dark Fantasy. Sunfeast. No, Sunfeast is also a SKU name. Dark Fantasy and Sunfeast, it's a brand from ITC. Just for your information. Tiger किसका है? Yes, it's ITC. Tiger you have heard, Parle-G जैसा एक टाइगर भी आता है ना? Britannia. Britannia, very good. Britannia. Very good, very good. And Choco Bake किसका है? Sir, Good Day. Good Day is also there. Good Day किसका है? Britannia. And Choco Bake किसका है? Choco Bake is from Mondelez. Okay, I mean Cadbury. Okay, so ये तो हो गया अबाउट बिस्किट सेगमेंट. चॉकलेट सेगमेंट इफ वी टॉक अबाउट 5 स्टार किसका है? Cadbury. या दैट्स राइट. पर्क किसका है? Cadbury. किटकैट? Nestle. किंडर जॉय? No, Cadbury. किंडर जॉय इज फ्रॉम फेरेरो. टिक टैक? Tic Tac is also from Ferrero. You have heard the name of Tic Tac, na? You all? Yes, sir. Okay. So this is about the more or less about the chocolate segment. Now coming up to the detergent segment, अगर हम बात करें या FMCG fast moving में अगर हम बात करें तो Tide किसका है? Tide detergent. No one? Tide is from PNG. Have you heard the name of PNG? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Have you heard the name of PNG? Anyone? कोई भी बोल सकता है यार, ऐसा नहीं है. You let's make it interactive. See, the reason I am asking you now, if you go to the FMCG, if you go to the students of SIS or any other IIP, they are
very much into a packaging. Okay, they think packaging. Okay, in the sense when they will go to the market, you tell them any name like Lakme or anything, they will tell you it's from which brand. So this is your label zero. Huh? From zero level, then they start exploring कि Lakme अगर है तो ये rigid packaging है, और ये अगर सर्फ एक्सेल है HUL का तो ये फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल में मटेरियल क्या है, 3 प्लाई है. सो 12 माइक्रोन पेट है, 7 पॉली है, 7 ये है, फिर 40 माइक्रोन पॉली है. सो दैट इज their level. So I am just exploring you at the first point of view, and I am trying to penetrate into your mind through a packaging perspective कि तुम्हारा दिमाग इस तरीके से सोचता क्यों नहीं. ओके, एंड इस तरीके से सोचना चाहिए. ओके, सो आई एम जस्ट ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग. HUL तो किसी ने बताया, HUL क्या क्या बनाता है? ऑल यू ऑल कैन गिव द आंसर. एक एक प्रोडक्ट तो सब बता ही सकते हैं. HUL मेक्स अराउंड 150 मोर देन 150 प्रोडक्ट्स इन इंडिया. एनीवन? Ponds. Ponds is from HUL. Very good. Yes, Ponds is from HUL. What else? Yes. Pierce also is from. Yeah, right. Pierce is also there from. Sir, Sorry? Brew Coffee. Huh? Brew Coffee. Lux, Yes, from Lux HUL. Lifebuoy. Lux also Sabun segment. Surf Excel. Excellent. Surf Excel. Surf Excel is from HUL, right? Then what else? You people know everything. Yeah. Only thing is you are scared of something. I don't know. You more you speak, more your teachers will appreciate. Nor. What are you afraid of? Soup wala. Nor. हाँ, कौन सा? Nor. Dove. Soup wala. No. What is that? Vaseline. Vaseline is also from HUL. Correct. Pepsodent. Pepsodent, very nice. Pepsodent is from HUL. Lipton. Cornetto. Huh? Lipton. Cornetto. Lipton is also from HUL. Actually, it is bought from any internet. Sorry? Dove soap. Huh? No, I can't. hear you. Sir, Dove soap. Which Sir, one? Vaseline. Dove. Dove is also from HUL, right? So in the Brew coffee. okay, brew coffee. Now it's repeating. So if I have to tell you कि soap के segment में Dove है, Lux somebody has said, and Pierce somebody has said. HUL is there, okay, which is dominating in the soap segment. Now coming to any other FMCG you know which are also a very good player in the soap segment, Sabun में. Cutthroat competition. They are giving a cutthroat competition to HUL. ऐसा सोचो ना कि कौन सा साबुन तुम यूज कर रहे हो और वो साबुन होगा कौन से कंपनी का. हाँ, Some Medimix. Medimix is there. From which brand it is? Sir, Dettol from Reckitt. Yes, Dettol from Reckitt. Very good. And very less people tell the name of the Reckitt. What all brand Reckitt is making? Very interesting, Abhishek. Dettol is there. What else? Sevlon किसका है मेरे को बताओ. ITC. ITC. Very good. Sevlon is from ITC. Okay. So And Fiyama and Vivel also. sorry. Fiyama and Vivel. Fiyama Devils. Okay, so Fiyama Devils is from ITC. They are also third largest player in the soap category. I'll tell you a very interesting story in the Fiyama Devil. Fiyama Devil first around 20 years down the line, they have come up with and this is important for you also to know. The owner of the ITC, he is a PhD. Okay, so what they did, that owner has come up with a soap which is in the gel form. Now it comes, but 20 years back it was very difficult for the people क्योंकि क्या है उनको साबुन हाथ में लेना and they feel it when they use it. So what happened, it was a good trend कि sour gel type concept कुछ इंडिया में launch करें, and it was the first time when ITC has thought about it. But 20 years back when they have launched this Fiyama Devil in the sour gel, it was a great flop.
and they had invested around 25 crore of setup already. So and that was not working at all because साबुन का जो concept है कि हाथ में लेके and feel करना and all this, so इनका बिक ही नहीं रहा था एकदम. It was a great flop. Then what happened? Their owner thought कि अभी इसको हम क्या करें, ये तो बिक ही नहीं रहा है, कि मार्केट में चल ही नहीं रहा, so this setup and everything will go into loss. Then they realized कि उसी सोप को हम फ्रीज करके बार बनाते हैं in the form of gel, and then that gel in the soap form, in the bar form only we will sell, and that was the greatest hit of the time 20 years back, and till now it's the third largest selling soap in India. You got my point. मतलब उसको सावर जेल को फ्रीज करके बार बना दिया, उसी को साबुन बना दिया, एंड सो फार दैट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन. अभी भी उसका फियामा डेविल्स का बार में ही मिलता है, बट दैट इज एक्चुअली अ जेल. सो दैट अपार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इन द soap segment we have covered it all more or less. Okay, there is some more. Synthol is there. Synthol, can you tell me which company is making Synthol? गोदरेज इज मेकिंग. उनका एक अलग का प्लांट है बद्दी में जो कि सिर्फ सिंथॉल के लिए चल रहा है, 60 एकड़ का. ओके, इजी इज आल्सो फ्रॉम गोदरेज. एंड व्हाट अदर एफएमसीजी यू कैन कम अप विद? अदर एफएमसीजी कंपनी, मैरिको इज देयर. मैरिको क्या बनाता है? Sir, they recently launched the Maggie See, I'll tell you one noodles. thing. I mean, You mean noodle ना? अभी you have made a very interesting point. अभी क्या है कि whenever जब भी एक एसक्यू का नाम ही एक उसका नाम बन जाता है, जैसे यू सेड मैगी, अभी हम लोग कोलगेट बोल देते हैं, मतलब यू मीन टूथपेस्ट. तो ये जो चीजें है ना, दैट इज अ वेरी डोमिनेटिंग इन द मार्केट. ऐसे और कोई तुम एसक्यू बता सकता है क्या? ऐसे और कोई ब्रांड जो कि उसी के नाम से वो तकिया कलाम हो गया, उसी के नाम से प्रोडक्ट ही बिकता है? जैसे मैगी, एक्चुअली बोलना तुमको नूडल्स था बट यू सेड मैगी. वैसा और कुछ एक और मैंने भी बता sir, Bisleri. ब्रिस्लरी. वेरी गुड, ब्रिस्लरी. हाँ, which one? Cellotape, sir. हाँ, Cello was company. yes sir, yes sir. And Fevicol is also there. What else? Parle-G. Coca-Cola. Coca-Cola, yes, Coca-Cola, very nice. अच्छा, मेरे को बताओ, कोको कोला एक टेट्रा पैक में बनाता है ये अपना जूस, जैसा अपना रियल है एंड ऑल दिस. कोको कोला का कौन सा ब्रांड है? माइन्यूट मेड, यू मस्ट हैव हर्ड. Yes, sir. या पेप्सिको कौन सा बनाता है? पेप्सिको ऑल्सो मेक्स वन जूस एज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटर टू माइन्यूट मेड, and which you must have used. Sir, The thumbs largest up. selling. Huh? Thumbs up. No, I'm talking about the Tetra Pak juices. Real जैसा होता है, मैंगो का जूस, गुआवा का जूस, all these juices ना, 1 लीटर में जो मिलता है. Fruity. No, Fruity is from Parle Agro. Tropicana, which they make in Baramati. Okay, you all have heard the name of Tropicana juice, na? Hello. Yes, sir. या ना? ओके. एंड अगर मैं पूछूं कि वी नेचुरल करके एक जूस है, वो कौन सी कंपनी बना? ITC का, आईटीसी का. वेरी गुड. Yes. यस. एंड पेपर बोट का हम लोग पीते हैं, मैंगो का बहुत फेमस हुआ था अभी, वो कौन सा है? पेपर बोट का है ना एक कंपनी, दैट इज हेक्टर बेवरेजेस. रियल is from Dabur. ओके, सो मैरिको का अगर हम मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा जो बाल में लगाने वाला तेल है. ओके, सोप का हम लोगों ने कवर कर लिया, चॉकलेट कवर कर लिया, बिस्किट कवर कर लिया.
Now detergent में तो you have said Surf Excel and what all detergent is there in the market? चलो it's take it in the other way. Market में क्या क्या detergent available है? घड़ी डिटर्जेंट. घड़ी detergent that is from Gujarat. Okay. और क्या है? Rin, Ariel. Rin is from HUL. Nirma. Ariel is from Ariel. which company? हाँ उनका Nirma. Nirma. Surf Excel. Perfect. So see, Tide and Ariel is from PNG. Okay, so Tide has a direct competition with Rin and Ariel has a direct competition with the Surf Excel. So that's how they are very much competitor to each other. Okay, we have talked about the liquids at Tetra Pak segment also, and what we have missed, coffee, biscuit. हाँ, oil segment. In the oil segment, बाल में लगाने वाला जो तेल है, कौन-कौन से तेल we are using and which all FMCG are making it? Sir, Marico is Parachute by Marico or Marico. Parachute? हाँ, which one? Parachute. Parachute. Yeah, by Marico. Parachute is by Marico, and that's the first largest selling oil in India. Huh? Remember, and that is by Marico. Okay, what all product Marico is making other than Parachute? You have heard the name of Setwet? Yes, sir. Setwet gel जो है, Livon का जो सीरम आता है, ओके, सफोला का ऑयल, ओके, ईडेबल ऑयल जो हम तेल डालते हैं जिसमें खाना बनता है, So Veggie Clean, that's the new thing. which one? Veggie Clean. That is also from Marico, क्या? Yes, sir. Okay, that is a soup, I think. Soup they have launched new, na? No, sir, it's to wash the vegetables. Acha, okay. Mm-hmm. And then Gillette is from which company? Okay, other than Maggi, see Maggi is the first in the noodles. Okay, और उसका competitor कौन सा है? मैगी का competitor तुम लोग खाया तो रहेगा 2-3 मैगी. EP है. EP कौन से कंपनी का है? Sunfeast. Sunfeast तो यार ITC is making. See, one thing I'll tell you. One is a company name. Okay. Second is a brand name. And third is the SKU का name, stock keeping unit. We will discuss about this. तो क्या होता है कि अभी मैं ITC बोल रहा हूँ तो ITC makes wheels, they make gold flake, they make EP, they make dark fantasy, they make आशीर्वाद आटा. So these are the brands of ITC. अभी अगर आशीर्वाद के अंदर में जाओ तो आशीर्वाद आटा के अंदर they make 50 gram, they make 500 gram of atta also, 1 kg, 1.5, 2 kg, maybe I don't know, I'm just randomly telling you. So 5-6 SKU होगा उसके अंदर. Likewise chocolate में भी होगा. So that is about the SKU. Okay. Okay, you have heard the name of Listerine mouthwash. Or leave it, let's talk about the shampoo segment and then we will conclude. What all shampoos you are using? Hello. Hello. Yeah. What all shampoos you are using? I am just telling you to give me the names. उसके बाद brand का नाम बता दो. Sunsilk is there. Sunsilk is there from Tresemme. Tresemme is Head from and which Shoulders. company? L'Oreal. Tresemme is from? ITC, sir. Tresemme is not from L'Oreal, I think. Tresemme is also HUL only. ITC, sir. I am not sure. You check about it. And what about the Sunsilk? Sunsilk is from which company?
Sir, Unilever. Unilever, very good. And what other shampoo? Head and Shoulder is from which company? Sir, PNG. PNG, very good. So let's conclude this. Okay, when I will talk in other. Yeah, Amir. Huh? Vatika, Davar. Right. So when you spoke of Davar, so you tell me, not you, anyone. Navratna is from which this thing? Dabur. Yes. Fair and Dabur. Handsome? Dabur. No, Navratna is not from Davar. Emami has a 3 leading brands under which they are very much successful and nobody could ever touch them. One is a Fair and Handsome. Okay, the only brand in India which was endorsed by 2 big celebrities, Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. That much hit it is in the market. Fair and Handsome. The reason, first time they launched something for the men's fairness cream. Second, Jhandu Balm. Okay, third is a third largest selling oil, Navratna. Okay, so now let's conclude it. Why I wanted to bring all these things to you people is just to open you up all up little bit. Maybe you are in second year, some are in third year, and some I see in final year also. So what happens is when you are giving an interview to a FMCG industry, so they will directly throw a question like, okay, say for example, you are giving interview for a rigid category, or if you are giving interview in the Marico, so their 70% sale is from the parachute. So you have to understand that the moment you go there, most of the questions are going to come from the rigid packaging. Most of the questions are going to come from कि plastic में अगर body हमारा Head and Shoulder, their competitor also questions will also come कि what about Navratna का तेल में कैप किसका है, PS का है, PP का है, तो क्यों PS का क्यों है, फ्लिप टॉप कैप है, तो फ्लिप टॉप में ही PS क्यों यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज मोर हिंज. बॉडी किस चीज का है, बॉडी पेट का है, तो पेट क्यों है, ट्रांसपेरेंसी के वजह से है. सो ऑल दिस थिंग्स आई एम जस्ट मिक्सिंग थ्रोइंग ऑल दिस थिंग्स टू यू. अगर तुम कहीं पे फेरेरो में चले गए या कहीं जॉब तुमको अगर मिल गया नेस्ले में, so Nestle, if they are taking you, they will be more or less asking you about the flexible things, because their 70% is Maggi, okay, in India. So likewise you have to open your mind. See, every day we are coming across these things, we are coming up with, every 1 hour we come around 10 other products. Okay, we see Happydent. Can you tell anyone which company is Happydent? Happydent is made by which company? Happydent is one of the most successful mint gum in the market. That is the company name is Prifiti from Delhi-based confectionery. So what I am trying to tell you, अगर तुम्हारा वहाँ पे when you go, so they are going to ask you about what do you know about flexibles, so you can speculate the kind of questions which they are going to ask you. Okay, so my point was only that every day we come across many products. Okay, every day we are seeing it. So why don't we just turn it backside and we see कि कौन से company का बना है, कहाँ पे बना है. It will not take more time. Okay, and if you can do this first 10-20 days ka exercise, believe me, you will know it all. It is so simple that it is just that we are not focusing on this direction. If you focus on this direction कि नहीं, अपने को अभी मेरे सामने जो भी है गार्नियर का है, तो उसको उठा के देख लिया कि यार गार्नियर ये कौन बना रहा है और कहाँ पे बना रहा है, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो व्हाट हैपेंस, तुम्हारा दिमाग देन पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचने लगेगा. फर्स्ट 10 डेज में ये प्रैक्टिस करो, एंड आफ्टर 10-15 डेज उसके मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओ. वंस यू आर थ्रू कि कौन सा कंपनी क्या बना रहा है, बिकॉज व्हाट आई हैव जस्ट कवर्ड
इट नॉट इवन अ 5% ऑफ इट, बट आई जस्ट कवर्ड जो जो मेरे को ध्यान में आया और जो जो मैं वट एवर आई कुड ब्रिंग इट टू यू. बट देर आर फ्यू थिंग्स यू सी आई ऑल्सो मिस नाउ, लाइक यू somebody said कि एक यूटेंसिल वॉश करने का मैरिको बनाता है, सो आई ऑल्सो मिस्ड. So that will happen, but more or less when you cover it, when you go to malls, your perspective will change to how do you look at it, and that is about the ground zero talk. Okay, now coming up to the level -1. -1 में क्या देखना है कि now let's take it in the other way. अभी in the biscuit category or say in the chocolate category, chocolate is the product. See, you said कि KitKat है, पर्क है, 5 स्टार है. Now you all know कि कौन कौन बनाता है. Mondelez is that 2/3 of the chocolate is in India is covered by a chocolate needs are covered by the Mondelez. Okay, and then followed by Ferrero, then followed by Mars, then followed by uh, there are other. Haldiram is also making, Britannia is also making, then Patanjali is also coming up with all this. So all these things is there. So my point is कि अगर लेवल 1 पे हम क्या बात कर सकते हैं, अभी हम सेगमेंट कर देंगे. चॉकलेट इज डिफरेंट कैटेगरी, बिस्किट इज डिफरेंट, ओके, आवर कॉस्मेटिक सेगमेंट इज डिफरेंट, एंड देन आवर ओरल सेगमेंट इज डिफरेंट, आवर क्लीनिंग सेगमेंट इज डिफरेंट. Okay, so let's talk about first the chocolate segment. अभी chocolate segment में when you go to the mall, now the moment you start observing कि नहीं Kinder Joy है या कोई ये कोई दूसरा है, यू नो रोशे है या कोई अदर चॉकलेट है, किटकैट है, तो किटकैट में you will see there is a flexible packaging, right? So that flexible packaging will be having 3 layer. Okay, but when you see it in the other segment, when you see it in other segment, somewhere it will have a 2 layer, or somewhere it will have a 4 layer, somewhere it will have a 5 layer. अभी edible oil का बात किया तो it will have a 2 layer only. तो ऐसा क्यों है कि हमको चॉकलेट में 3 लेयर का जरूरत पड़ रहा है? Anyone? 3 layer of flexible I am saying, like say for example 12 micron PET, 7 micron foil, and 40 micron polyester we are using. So ऐसा क्यों है कि हमको 3 layer का जरूरत पड़ता है उसमें? सर प्रोडक्टच्या प्रॉपर्टीजवर डिपेंड असतं सर, त्याची शेल्फ लाईफ किती ठेवायची त्यावर, किंवा त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीजवर आपण मटेरियल ठरवतो सर. हाँ, तो प्रोडक्ट की मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि चॉकलेट में सेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चॉकलेट में 3 लेयर मतलब बैरियर प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा चाहिए, बरोबर? येस सर. तो बैरियर प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों चाहिए उसमें? ऐसा क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा क्या है? चॉकलेट किससे बनता है? सर सुधीर? एडिबल प्रोडक्ट है इसलिए. हाँ, एडिबल प्रोडक्ट है इसलिए. तो जो भी है एडिबल ही है. अपना जो अभी मैं सफोला बोला या तेल का जो बोला, दैट इज ऑल्सो एडिबल. सी, इन द फूड कैटेगरी ना यू हैव अ 3 डिवीजन. You have a staple foods, okay, staple food, and then you have a perishable food, you have a semi perishable, and then you have a staple food. Write down somewhere. So perishable food क्या है? पेरिसेबल फूड इज समथिंग जिसका सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन रहने वाला है तुम्हारा. जैसे जैसे कि दूध, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो उसका सेल्फ लाइफ जहां पे चैलेंजिंग, सेल्फ लाइफ जहां पे कम है, तो वहां पे लॉजिस्टिक हमको एकदम फिट रखना पड़ता है. दैट इज अबाउट द पेरिसेबल, एंड देर इज नो मच स्कोप ऑफ द पैकेजिंग देयर. यू नो, मिल्क पैकेट इज पैक्ड इन which all format? Can you all tell me? हेलो एनीवन? मिल्क यार पाउच में दिखता है तुमको, वो पाउच क्या है, कौन सा मटेरियल है? अभी तुमको अगर मैं पूछूंगा प्रिंटिंग कौन सा है तो खटाक से तुम बता देगा फ्लेक्सो है. हेलो
नो इंटरेक्ट, अगर गलत भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेट इट बी, लेट यू बी रॉन्ग, देर इज नो इशू एट ऑल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? Yes, sir, you are very much it's audible. So I want students to answer. हाँ हाँ हाँ, नो समटाइम्स ना मैं ऐसा लगता है मेरे को कि शायद हैंग हो गया मैं, मेरा No, it's नेटवर्क। okay. You are very much audible. या सुधीर, तारा तारा की, इफ आई एम Polyethylene, sir. सर पीपी सर. पॉलीइथिलीन, LDP sir, राइट राइट। LDP. जब जब मालूम है आंसर तो बोलो ना, यू वेस्ट 30 सेकेंड्स ऑफ एवरीवन्स टाइम। एलडीपी, सर पीपी एल्यूमिनियम फॉइल सर. लेकिन पाउच में एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है। और कौन सा दूध में हम क्या क्या सेगमेंट में पैक करते हैं दूध को? Sir, टेट्रा plastic पैक में भी bottle. करते हैं ना। यस सर. एंड व्हाट ऑल फॉर्मेट? Glass bottle, yes. So see, one of the classic example in front of you just now you have said is, एक ही दूध है, उसको हम LDPE में पैक कर रहे हैं तो सेल्फ लाइफ इज 72 hours, and when we are packing it in the glass bottle, because the barrier property of glass bottle is different. Okay, of course we have some additives added in milk also, but अगर वही मिल्क को हम ग्लास बॉटल में पैक कर रहे हैं तो सेल्फ लाइफ becomes 3 months, and the same milk when it is packed in the Tetra pack, the shelf life becomes 6 months. So what is changing here? Only the packaging format is changing, and just by changing the packaging format, you could increase the shelf life. Meaning, you are giving more barrier property. See, especially I'll tell you, milk-based product जो होता है ना, milk-based product is not just prone to the OTR and WVTR, but it is also very prone to the UV light. UV has a three rays, okay, UVA, B and C. So when the UV light penetrates into any milk product, na, what happens is the milk का जो fat होता है, it will start reacting with that light ray, UVB से basically. Okay, so that fat will get converted into a fatty acid. Same happens in the तुम्हारा this also in the potato wafers, Lay's कौन बनाता है? Frito-Lay. Which one? Frito-Lay. No, Lay's is made by PepsiCo. Pepsi. Yeah. So okay, coming back to that, कि वो क्या होता है, देन द फैट विल रिएक्ट विद द रेज एंड इट विल फॉर्म अ फैटी एसिड। तो तुम देखो ना, लेज को अगर हम छोड़ देते हैं या अगर हम सिंगल लेयर में करते हैं rather than currently it's in 3 layer, एल्यूमिनियम फॉइल इज देयर व्हिच प्रोटेक्ट्स द लाइट, बट अगर सिंगल लेयर वाला रहता है तो तुम देखो जब हम खाते हैं तो एक ऑड स्मेल आता है उसमें। सो मीनिंग अगर खराब हो गया है तो दैट मीन्स इट हैज रिएक्टेड, इट इज ऑलरेडी द शेल्फ लाइफ इज गॉन। सो ऐसा है। सो दैट इज अबाउट द पेरिसेबल प्रोडक्ट। नॉन पेरिसेबल क्या होता है? जिसका ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसका सेल्फ लाइफ 3 से 6 मंथ्स हो, नॉन सेमी पेरिसेबल, सॉरी। इन द फूड कैटेगरी अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज पेरिसेबल, जो मिल्क दूध मैंने बात किया, देयर इज सेमी पेरिसेबल एंड देन देयर इज अ स्टेपल फूड। सेमी पेरिसेबल क्या है? एनीवन जो कि सेल्फ लाइफ 3-6 महीने होगा यार, तुम देखा ही होगा। अभी हम लोग कितना चीज डिस्कस किए। सर ऑयल सर. ऑयल इज देयर, देन Sir, flour, atta. आटा, राइट राइट। देन व्हाट एल्स? Bread. विच वन? Bread. ब्रेड नहीं रे नील, ब्रेड तो कितने दिन में खराब हो जाता है? टोमेटो सॉस। हाँ, सॉस अपना टोमेटो। टोमेटो सॉस, राइट। हाँ, जैम्स। Pickles, achar. सर सॉफ्ट ड्रिंक सर. No, pickle is another segment. We'll discuss about this. Then what else? सॉफ्ट ड्रिंक सर.
Soft drinks, right? Then what else? What else, Aarti? Anything you can tell? Aarti, Pranav, Saurabh, Sir, cheese Amul butter. Amul butter, very good. Shraddha, Shraddha madam है. Okay. Sanket, Sir, meat products. which one? Meat products. Meat products, no, that is coming in the perishable only. अच्छा हो गया, you reminded me. Because the shelf life is less, na? Shelf life is coming to around 3 days to 10 days. Frozen, you can say, frozen meats. ओके देन सेमी पेरिसेबल यार, चॉकलेट है, बिस्किट है, जो भी 6 से सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली इन द मार्केट, यू विल फाइंड कि अप टू 1 ईयर तक का उसका सेल्फ लाइफ है, राइट? देन कम्स द थर्ड कैटेगरी कॉल्ड स्टेपल फूड. स्टेपल फूड कौन से हैं? हैव यू हर्ड द नेम स्टेपल फूड्स? जो कि कम से कम 2 साल से ऊपर ही चलेगा वो. Rice, wheat. राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट. देन Sir, beans. राइट राइट, ऑल दिस ना, बीन्स जो है प्लस ड्राई फ्रूट्स हैं, सो ऑल दीज थिंग्स विल गो मोर देन 2 years. जो भी ड्राई फ्रूट्स या तो दाल हो गए, ऑल दीज थिंग्स, जो भी दाने का जो भी चीज है ना, मूंग, ऑल दीज थिंग्स. So this was about the my only point here to tell you all this and waste 50 minutes of the time is you understand how FMCG thinks and you understand what you are thinking and where is the gap. You got my point. So how, see, if you consider me as a FMCG guy, I think from that point of view. Okay, if you are coming to the Ferrero, I'll ask you about have you ever seen the Kinder Joy or have you ever seen the Rocher? So you will say, yeah, I have seen. So what is the material? If you have seen, so you may not be exactly right. What is the GSM? More you answer, more deep down I can go because it's my product and I know it all well. So I can deep dive. If I am in Nestle, I'll go, have you seen the Maggie? What is the material? How many layers? So it's a single layer. So what is the other competitors? Have you seen? So EP, what is the layer and how many micron they are using? So the moment you say if they are using 20 micron and I am using 23 micron, so there is a cost saving proposal. You are telling you can decrease it to 3 micron. That's how the benchmarking in 1 minute. Huh? Yeah, sorry. So any product, if you ever get a chance to go to the FMCG companies, and you know this is not something which you can just study one night before and give the exam. It will not come with that. It will come with the practice, with the proper thinking, with the deep diving. Not just if you take in your hand some material, you should understand कि ये कौन से brand है और इसके क्या क्या competitor हैं, क्या क्या material है. Okay, so these are the things. Now I'll take you through some industrial challenges. Okay, 10 minutes we have. Achha, madam said to talk about sustainability also. So, okay. So we'll first talk about sustainability. Okay, now what do you understand by sustainability? Anyone? Can you all hear me? Sir, recycle. Sorry? See,
do you understand linear and circular difference? Anyone? Swati madam, can you see my screen? Yes, sir. It is visible. Can you help me how to again go back to the Zoom ka jo list of students and all this? How I stop? I have to do a stop kya? You are presenting, so you have to stop that. Here is a button in which written is. Later, I'll first stop. Yes. Okay, no problem. You can just have a talk and then you can start with the PPT. So, but where is the Zoom now? Where is the Google Meet now? Sir, Google Meet means? On which we are talking, na? Yes, sir. Okay, I got it. Okay. Okay. So in sustainability, I'll directly tell you, since we have a less time, so rather not waste asking question. Now we all are being very interactive. There is no issue. So in sustainability, what happens is, see, there are two ways. One is the conventional way, जहाँ पे हम linear sustainability follow करते थे, linear economy. Linear में क्या होता है कि suppose, see how it works. I'll tell you. हम and there is a sea under which there is a naphtha. जैसे हम ऑयल निकालते हैं ना, ऑयल इंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही हम एक और पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड नेप्था. वो नेप्था को रिलायंस हो गया, डब हो गया. आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट वेरी फास्ट. एनी क्वेश्चन विल पुट इट फॉर लास्ट 5-10 मिनट्स. नेप्था को हम आइदर बाय व्हीकल और बाय द अंडरग्राउंड सी बेड के अंदर ही एक पाइप रहता है, थ्रू विच वी टेक इट एंड वी फर्दर फिल्टर इट. ओके, रिलायंस इज डूइंग इन इंडिया. सो उसके बाद हम लोग ग्रैनुअल्स निकालते हैं. ग्रैनुअल को हम लोग फिल्टर करते हैं बेसिस ऑन द टेम्परेचर. तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वी गेट फ्रॉम नेप्था. यू ऑल नो व्हाट ऑल 7 टाइप्स. कौन कौन से हैं 7 टाइप्स? कैन वी हैव द नेम प्लीज? महेश, at least BE people can tell. Yaar, Sudhir, No, sir, no idea. 7 types of plastic you don't know? Sir, PP, sir. PP is there, PET is there. What else? Polyethylene, sir, poly. LDP, HDP. LDP. DOPP. Polystyrene. Sir, PVC. Super. Then what else? Polyester. Polyester is PE. Polypropylene. Polystyrene. Polystyrene, PS. Okay. LDP. ठीक है, LDP. ठीक है, great. So these are the 7 type of plastic we get. अभी ये 7 तरीके का प्लास्टिक का ग्रैनुअल हमको मिल गया अलग अलग, राइट? और ये 7 ग्रैनुअल्स में ये हम कहाँ पे, ये कौन बनाता है ग्रैनुअल्स? ग्रैनुअल जो है वो कौन बना रहा है? ये ग्रैनुअल्स हमको ग्रैनुअल्स बनाते हैं रिलायंस वाले लोग. ग्रैनुअल सप्लाई कर देते हैं जो पॉली बनाते हैं. पॉली कौन बनाता है हमारे इंडिया में? कॉस्मो बनाता है, जिंदाल बनाता है. सो ग्रैनुअल से पॉली बनाते हैं ये लोग. ग्रैनुअल्स को ये करके मैक्स बना रहा है, उसको फिल्म बनाते हैं. ओके, फिल्म बनाते हैं. कॉस्मो समझो औरंगाबाद या दिल्ली में फिल्म बना दिया, वो फिल्म कन्वर्टर को देते हैं. HPPL है, लेबल है तो लेबल वाले को भी देते हैं. ओके, सो वो फिल्म समझो HPPL को दिया या कॉन्स्टेंसिया को दिया या फिर अपना जितने भी है यूफ्लेक्स को दिया. वो फिल्म यूफ्लेक्स बनाया. यूफ्लेक्स फिल्म को क्या करेगा? प्रिंट करेगा. बरोबर महेश, ऋतुजा? Yes, sir. प्रिंट करेगा ना? वो कौन सा प्रिंटिंग मेथड से प्रिंट करेगा? Either gravure or flexo, sir. Right. Absolutely. So they will print it. After printing वो कहाँ भेजेंगे? प्रिंट करेगा, उसके ऊपर मैगी प्रिंट होगा या उसके ऊपर फेरेरो का प्रिंट होगा या टाइगर प्रिंट होगा, मैरीगोल्ड होगा, सिंथॉल का कुछ होगा, फ्लेक्सिबल का. तो वो कहाँ भेजेंगे? अपने FMCG जहां पे उसका ऑर्डर मिला होगा वहां भेजेंगे, राइट? Yes, sir. Yes. तो समझो मैगी का है नेस्ले में, गोवा भेज दिया उन लोग. ओके, तो वहां पे नेस्ले क्या करेगा?
नेस्ले इसको पैक करेगा अपने पैकिंग लाइन पे। देयर विल बी अ मशीन, बीएफएफएस मशीन, एचएफएफएस मशीन, हॉरिजेंटल फॉर्म फिल सील, वर्टिकल फॉर्म फिल सील। वहां पे मैगी ये हॉरिजेंटली फिल हो गया, मास्टर कार्टन में पैक हो गया। उसके बाद वो मैगी कहाँ जाता है? वेयर हाउस में जाएगा। वेयर हाउस से कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल वेयर हाउस में। एक्सटर्नल के बाद कहाँ जाएगा? स्टॉकिस्ट के पास। स्टॉकिस्ट के बाद रिटेलर के पास। रिटेलर के बाद कहाँ जाएगा? कस्टमर कंज्यूमर के का पास, हमारे पास आएगा। Yes. हम मैगी खा के कहाँ थ्रो करेंगे? Dustbin. हम फेंक ही देंगे ना मैगी का जो रैपर है उसको, Yes, yes, sir. बराबर। अगर किंडर जो है खा रहे तो फेंक ही देंगे ना हम। Sir, yes, sir. तो ये जो है हम फेंक दिया, तो दिस इज कॉल्ड एन लीनियर मेथड है। यहाँ के बाद वो सर्कुलर नहीं हुआ, मतलब हम सेम चीजों को रिसाइकल नहीं कर पाए। बट नाउ गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ रिजोल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज ईपीआर, ओके, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या होता है कि नाउ गवर्नमेंट हैज सेड कि अगर फेरेरो है, या अगर समझो फेरेरो बारामती में चॉकलेट बना रहा है, लेकिन अगर उसके 28 स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे, समझो मुंबई फॉर एग्जांपल, हम मुंबई में 100 टन चॉकलेट बेचते हैं, तो फॉर सेलिंग 100 टन्स ऑफ द चॉकलेट वी आर डंपिंग अराउंड 10 टन्स ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल। जस्ट रफ मैं बता रहा हूँ, अगर हम मैगी 100 टन बेच रहा है अगर मुंबई मार्केट में, तो समझो 5 टन प्लास्टिक मटेरियल भी होगा उसमें, या 1 टन होगा। 1 टन तो वो प्लास्टिक मटेरियल डंप कर रहा है, जो कि वो कुछ कर नहीं रहा उसके बाद। इनडायरेक्टली दे हैव अ डेटा फ्रॉम द एफएमसीजी कि आप कितना कौन से स्टेट में बेच रहे हो, या कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेच रहे हो, वो डेटा तो है उनके पास। तो नाउ गवर्नमेंट सेज कि भैया अगर तुम किंडर जो है मुंबई में 100 टन बेच रहे हो और उसके बेसिस पे 1 टन का वेस्टेज हो रहा है, एक टन का प्लास्टिक डंप कर रहे हो मुंबई में, तो इट बिकम्स फेरेरो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 टन जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करो। अभी ये बताओ फेरेरो कैसे करेगा? 100 टन किंडर जो है जो है ये कितने लोगों में बट गया होगा? ये तो 10 लाख लोगों में बट गया होगा, और हर आदमी अलग अलग जगह पे है, जोग्राफिकल लोकेशन पे। उससे एक एक किंडर जो है का डब्बा जो वेस्ट डब्बा जो बच गया है चॉकलेट खाने के बाद, लेने के बाद रिसाइकल करना, इज इट पॉसिबल और इज इट फिजिबल? No, sir, it's not possible, sir. इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो कैसे करेंगे वो? सोचो जरा 1 मिनट, कैसे रिसाइकल हम सर्कुलर इकोनॉमी में कर सकते हैं इसको रिसाइकल? समझो तुम गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं इसको अभी? ये तो सिर्फ क्या है, यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक तरफ से आता जा रहा है, मुंबई में कचरा फैलता जा रहा है, या कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कचरा फैलता जा रहा है, और एफएमसीजी तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है उसको ये करने का, और सारे लोग सिर्फ कचरा फैला रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, हम उसके लिए क्या बेस्ट टेक्निक यूज करें। तो ये तो बेस्ट टेक्निक नहीं हो सकता कि सब लोग ये कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, the biggest FMCG who is just making a nuances is PNG, HUL, क्योंकि उनके ज्यादातर मटेरियल फ्लेक्सिबल्स है। तो उनका उनसे हम कैसे ये सर्कुलर में लेके आ सकते हैं? एनी आइडिया, एनीवन? ठीक है, सो सिंस टाइम इज रनिंग आउट, तो देर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी कॉल्ड ईपीआर। उसके तहत क्या है कि ईपीआर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होगा? फेरेरो होगा। अगर किंडर जॉय की बात करें, किंडर जॉय बनता कहाँ से? कॉस्मो देता है फिल्म एचपीपीएल को, एचपीपीएल बनाता है फिल्म और प्रोवाइड करता है फेरेरो को, फेरेरो देता है मार्केट में। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट का प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इज इट कॉस्मो, इज इट रिलायंस, कॉस्मो, एचपीपीएल और फेरेरो? चारों में से कौन, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
फेरेरो का जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका राइट, एब्सोल्युटली। टेन है। रीजन इज कि जो रिक्वायरमेंट, जो नीड किसका है, एग्जैक्ट नीड किसका है। अगर फेरेरो को लैमिनेट नहीं जरूरत होता तो कोई बनाता, कहीं से इनिशिएट ही नहीं होता। तो इट इज बिकमिंग अ फेरेरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और द एफएमसीजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर 50 टन प्लास्टिक अगर आप डंप करते हो इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट, आपको मालूम है कि 40 ग्राम का एक किंडर जो है चॉकलेट है, तो उसमें 4 ग्राम आपका जो है वो that is a plastic. Okay, and your net weight of the product is do you know the difference between net weight and gross weight? Anyone? मैगी अगर 70 ग्राम का है तो अगर इसका मतलब क्या है, 70 ग्राम इज व्हाट, नेट वेट और ग्रॉस वेट? व्हाट डू यू मीन बाय नेट वेट एंड ग्रॉस वेट? एनीवन? 10 more minutes and I will conclude. Be with me. So the net weight is simply the product's weight net weight is excluding its packaging. Okay, and gross weight is The weight of shipment. no, man. See that you are half correct. Net weight is जो product का weight है and gross weight is product plus pack. Okay, so that is a gross weight. So what I was telling you कि अगर हम प्लास्टिक 50 टन अगर प्लास्टिक हम डंप करते हैं मार्केट में, तो इट इज आवर रिस्पॉन्स, फेरेरो का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसाइकल 50 टन. एंड नाउ हाउ फेरेरो कैन रिसाइकल, व्हाट फेरेरो कैन डू कि देयर इज अ गवर्नमेंट का वेबसाइट, तो उसपे इनको हर महीने जितना प्लास्टिक ये डंप कर रहे हैं इन द ऑल द 28 स्टेट, समझो हम लोग 120 मैट्रिक टन हम लोग डंप कर रहे हैं मार्केट में, तो 120 मैट्रिक टन हमको ये इतना रिसाइकल करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डू, देयर इज अ थर्ड पार्टी प्लास्टिक रिसाइकलर, उससे हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको हम पे करते हैं 1 kg को रिसाइकल करने कहीं से भी. इट नीड नॉट बी अ किंडर जॉय ओनली. हम कोई भी प्लास्टिक उठाते हैं, ओके, एंड 120 मैट्रिक टन हम कोई भी प्लास्टिक उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं मतलब थर्ड पार्टी से टाई अप रहता है, उसको हम पैसा देते हैं. दे विल टेक इट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम डंप यार्ड, एंड दे विल टेक 120 अलग अलग जगहों से, वो रिसाइकल करेगा हमारे लिए एंड हमको सर्टिफिकेट देगा, ठप्पा देगा, जो कि हम गवर्नमेंट को अटैच करते हैं कि भैया ये हम लोगों ने इस महीने इतना डंप किया था, अगेंस्ट दैट सेम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी हैव रिसाइकल्ड इट, एंड दैट थर्ड पार्टी इज ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड. तो वो लोग एक्चुअल में करते हैं, ओके, कहीं से भी डंप यार्ड से उठा के उतना रिसाइकल करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर सस्टेनेबिलिटी. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone has any question तो पूछ लो. I'll try to answer. कुछ भी in terms of laminate, in terms of rigid, in terms of paper, sustainability. या वैभव? हेलो, Students, the are open for question and answer round, so you can ask anything you want. Sir, which type of packaging is used for kurkure wafers? Kurkure wafers. So if you have seen the Kurkure wafers, Pranali, so it's a 3-layer, okay, flexible packaging. Yes, sir. Okay, so in 3 layers, what happens is you have a 3 different options. Okay, you can now I'm not presenting or I'm presenting. 1 minute. You can, I'll show you. See, there are, for the wafers now, you can have a PET. Okay, you can have a aluminium, and you can see the screen now. Yes, sir. Mostly they put it 12 micron.
7 micron, and this one is 40 micron. Okay, alternate you can always have it, like instead of PET you can have it BOPP, wherein okay, BOPP is little cheaper than PET, so but it has a less shelf life. So what happens is it becomes very important. अगर तुम्हारा लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है तो सेल्फ लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे ही तुम बनाते हो वैसे ही बिक जाता है. So you can have some cost saving proposal. You can have a BOPP with 15 micron, and the same you can follow 7 micron and 40 micron. Okay. Instead of this, also there is an option of MedPet. So these are the possible options, and you can always play with this. See, whenever you have a doubt, what you do, you try to take a कुरकुरे का एक सैंपल, और अपने लैब में क्या करने का, अपने लैब में उसका GSM टेस्टर तो है ही. You can always check the GSM. Okay. So the only thing is अगर पेट है तो उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का. से फॉर एग्जांपल अगर 10 माइक्रोन या 12 माइक्रोन का है तो 12 इंटू उसके डेंसिटी 1.4 से मल्टीप्लाई करने का. सो दिस इज योर GSM. ओके. सो वट एवर GSM कम्स, अगर GSM तुमको 17 माइक्रोन मिला तो उस पर डिवाइड कर देना. 17 माइक्रोन डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, whatever the density of the plastic, that you will get. BOPP का अगर है कुछ या अगर कोई भी है तो उसका तुमको मिल जाएगा. So that way you can always do the analysis at your lab. Okay, need not be अगर मैं PET और BOPP बोल रहा हूँ, अभी कोई अलग ही EVOH का बैरियर लेके आ जाएगा यहाँ पे. So that is also okay, basis on what their requirement is. Okay, so we never know. So here if you say 1.4 उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई तो ये तुम्हारा माइक्रोन आ जाता है. So you have a you measure the GSM divided with the density, you will get the microns. कितने माइक्रोन्स का कितने कौन कौन से लेयर है, और जहां पे भी तुमको फॉइल जैसा दिखे मतलब तो you understand कि it's a foil or MedPet. You will understand that वो tearing property से तुमको समझ में आएगा. We will take that material analysis maybe next session. Yeah, any other question, anyone? Sir, I want to ask you how FMCG is affected by the pandemic, and I also heard about like there are some restrictions on importing of a pepper from other countries. So how this affected in the packaging? See, basically, I'll tell you, FMCG. There are two other questions. In this pandemic, what has happened is in the FMCG also there is a two types of commodity. Okay, essential commodity and non-essential commodity. Whichever is the essential commodity, they are blessed. Okay, like biscuit category. In Britannia, the sale has increased in this 1 year by 200%, which they have never imagined down. मतलब ये जो चीजें 7 साल बाद होने वाला था वो उनका अभी हो गया. So likewise, whichever is their Parle G, abhi they are boosting up like anything. So these are coming under the essential categories. Now there are some segments which are non-essential, like chocolate. In this pandemic, nobody would give their children a chocolate. So they are badly affected. But since mostly it's a large FMCG, so they can sustain this kind of pandemic for another 20 years. They are very strong companies, like 23 billion. Agar in terms of Indian rupees you see, तो 5 लाख करोड़ के आसपास का revenue generation is from Cadbury, and they are the same is for the Ferrero also. So these things, of course, it is damaging them, but very 2-3 years also if it continues does not matter for them. And as long as your paper question was there, Santanu, that China has stopped making giving us a paper of recycled paper. The reason is very simple. Okay, now you know craft paper, you all are aware, the brown one. Okay, before the craft paper cost was 31-32 rupees,
And in the craft paper, if you see, or grayback paper, the around craft paper, I'll tell you about 80% are the recycled paper. But in this pandemic, what has happened is there is lot of demand of logistics. Not only India and China, everywhere. And China, we used to take all the recycled material of China in India, and then we used to use it in the craft. So अभी चाइना ने बंद कर दिया किसी को भी देना. China is serving their own needs. Okay, and उसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया में जो रिसाइकलर हैं उनका डिमांड फॉरेन में बढ़ गया, इटली, यूरोप में. नाउ दे स्टार्टेड सेलिंग इट इनटू इटली. तो जो क्राफ्ट पेपर हमको 35 रुपए में मिलता था, these manufacturers like Gayatri Shakti, they are Nehali, these people are not giving it to Paksans. They are giving as a good relation, but the recycle part they are selling it to the Europe because they are getting a 50 rupees and we will give 35 rupees. So whichever cost they are getting better, they are giving them, and for us they are giving in the lots. 100 टन महीने का एक बार में ही हमको प्लान बताना पड़ता है. सो थिंग्स हैज बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन क्राफ्ट. या एनी अदर क्वेश्चन? I hope students have enjoyed the session. And I think it was very interactive session from your side as well, sir. Sir, we have with us our HOD ma'am, Professor Mrs. Madhura Mahajan. So I would request ma'am to give some feedback about this session. So, yeah, hello, good afternoon. Hello, Madhura madam, good afternoon. Yeah, I think Mr. Avinash, we listened to something very interesting today. Yeah, madam, thank you. Something live from the market, live from the industry point of view, and I think whatever you shared, information that you shared, I think it was way beyond what we actually teach in our syllabus. Absolutely. And so that gave us a glimpse of what happens in the industry and what are the things that students should also be aware of. Yes, but as you mentioned rightly that this area is vast, the packaging part is vast, and we have just started these packaging subjects now from second year, and we thought that we should have some expert session on this topic. So that the students get an awareness of from the industry perspective. Right. So we would be really happy if you can definitely join again for such interactive sessions, which will help our students. Definitely. So it was really very, very good, and we hope to see you back again. Yeah, thanks, ma'am. Yes, ma'am. Definitely, we will be having another session with Avinash, sir. Definitely. So now we have with us Mr. Akshay Joshi, Dr. Professor Akshay Joshi. Welcome, sir. He'll be giving the vote of thanks for this session. Sir. Joshi, sir. I think some network Hello. issue, Akshay sir. No, he is very much there. Hello. Yeah, Akshay sir, how are you? Yes, sir. I'm fine. I think all others have spoken. You have given a very interactive session. तो I think मेरे ख्याल से कई लोग हैं, आपने भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया हिंदी में, तो मैं भी थोड़ा शब्दों का प्रयोग करूंगा हिंदी में ताकि सबको भी समझ में आ जाए. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो मुद्रण विभाग की ओर से मैं श्री अविनाश जी पार्कसंस के उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे छात्रों को FMCG पैकेजिंग, उनकी आवश्यकताएं, उनके उत्पादनों का प्रकार, उनके वर्गीकरण, उसका स्थिरता के बारे में हमें जानकारी दी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छात्र जो यहाँ पे शिरकत किए हैं वो इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे, और इसी मुद्दे को नजर रखते हुए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, Yeah. for giving the
valuable feedback, and definitely Avinash sir, we will be looking forward for such interactive sessions in the future as well. We know your availability time is very much you to arrange such type of like timing. So this is very much difficult. Yeah, no problem. Any Saturday we can do something So, like that. yes, sir, We'll definitely we discuss will be about having. it. Yeah. Yes, Okay. sir, surely. What we can do, Swati ma'am, is that we'll Yes, ma'am. break up into small topics, so that Okay. then sir can focus on smaller areas. Right. Okay, ma'am, definitely. So ठीक है, firstly, madam. we have to Thank you. take his appointment, and then we will be in this type Sure, of session sure. only on Saturdays. No, we can do it on other day also. Just I'll tell you one day before. Like it's, Yes, sir, sure. It's We the will be having according to limitation your from my availability only. Sure, yeah, sir. yeah. So ठीक है. thank you so much for Thank you. like all the Yeah. students have also for coming this session. Yeah, thank you, all. Madhura madam. Thank you, Akshay sir, for such a Hindi after a long while. And thank you, Swati madam. Thank you, students, for joining and listening so patiently with me. So, जब कोई हमारे सामने हिंदी बात करता है तो अनायास हमारे मुख से हिंदी के बोल निकल आ जाते हैं। हाँ, बस वही हमने आपके सामने पेश किया। कभी उर्दू भी बोल देते हैं सर आप एक दो वर्ड। बस वो थोड़ी सी है। ठीक है, चलिए जी, ओके। ठीक है, ओके सर। Thank you, Okay, students. Madhura madam. Okay, yeah, Yeah, thanks bye-bye. everyone. Thank you. Thank you for that. Yeah, thanks. Okay. Goodbye. Bye. Thank you, students.